हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज तोमर एंड आई होप आप सबने पिछले लेक्चर का सारा रिवाइज कर लिया होगा, तभी आप आज के लेक्चर में जुड़े हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ इस लेक्चर में नहीं जुड़ रहे हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि वो जाके पहले स्टार्टिंग के सारे लेक्चर देख ले, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। और उसी के साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से आगे बढ़ा सके और आपकी कॉन्सेप्ट में अच्छी पकड़ हो सके। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर लेक्चर, बट बिफोर वी स्टार्ट आवर लेक्चर I want to say you something. For those students who feel bored or feel hesitate to speak English, it is a lack of practice. As an example, you have one coin and you are not feeling weight, still you are feeling hesitate to invest in any shop. That I have one coin, so what the society will say and what the people will say about me. But when after 10 to 15 days now you have 10 to 15 coins in your hand and now you want to invest in the shop, but you have weight on your hand and now you want to put off that no, I can't handle this weight of coin, that I am giving up. And the same thing with the spoken English. Until unless you will not start to practice our rules and start to make sentences by yourself, and you will not make habit of spoken English, you cannot be a good speaker. If you want to be a good speaker of English, so you have to focus on all the things and all the concept of spoken English. As an example, whenever you start to speak something, you feel hesitate that what the people will say about me. Nobody have as much time who thinks about everyone. Everybody has own work into his life and nobody want to interrupt. As an example, you have your own work of spoken English and now you want that please don't the second person interrupt while I am speaking English or while I am practicing or revising my rules. So nobody has as much time who will give you proper attention that what you are doing. So it is a difference of our mindset that what do we think. Once you become a mindset that I will speak English, so you definitely can speak English and soon you will be a good speaker. But for this, you have to do practice on daily basis. And now I'll ask you some mixed question from all the rules that you have learned in the past. That do you speak English? If you reply that yes, I speak English, or no, I don't speak English, my next question is, where do you speak English? Then you will reply, I speak English at my home. And my next question is, can you speak English? If you agree, then you will reply that yes, I can speak English. But if you deny, then you will reply that no, I can't speak English. Then I'll ask you that, how can you not speak English? Then you will reply, I can't speak English because I am not practicing of my rules. And my next question will be, will you start to speak English? Then you will reply that, yes, I will start to make habit of spoken English and I will start to revise all the things and I will start to speak English. But if you deny, then you will reply, no, I will not start to speak English. And my next question will be, have you spoken English? Then you will reply, no, I have not spoken English. But if you agree, then you will reply that yes, I have spoken English. And my next question is, do you want to speak English? Then you will reply that yes, I want to speak English. But if you deny, then you will reply, no, I don't want to speak English. Then I'll ask that, why do you not want to speak English? And then you will reply, I want to speak English, but I have fear of pupils, that what the people say about me. Then I'll ask you that, are you fond of speaking English? Then you will reply, yes, I am fond of speaking English and I like to speak English. Whenever somebody talk with me in English, so I feel good. Then I'll ask you that, are you sick of spoken English? Those person who does not practice all the rules, they will say that yes, I am sick of spoken English. But those person who practice all the things on daily basis, they will say, now I'll ask that, are you speaking Hindi at this moment? Then you will reply that no, I am not speaking Hindi at this moment. Then I am asking that, which the language are you speaking at this moment? कि तुम इस समय कौन सी भाषा बोल रहे हो? Then you will reply, I am speaking Urdu, Hindi, English, Mexico, French. It can be any language. Which do you want to like to speak? But if I ask you, which the language do you want to speak while communicating? कि बात करते समय तुम कौन सी भाषा बोलना चाहते हो? Then you will reply, I want to use Hindi language while speaking or while communicating. कि कम्युनिकेशन करते समय मैं हिंदी भाषा बोलना चाहता हूँ.
एंड नाउ आई आस्क यू दैट व्हाट इज योर हॉबीज, कि तुम्हारी क्या क्या खूबियां है. देन यू विल रिप्लाई माई हॉबी इज टू कुक एंड टू ईट समथिंग, और माई हॉबी इज टू स्टडी एंड टू मेक नोट्स, और माई हॉबी इज टू लिसन म्यूजिक एंड टू प्ले क्रिकेट. एंड नाउ आई आस्क यू दैट व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ, तुम्हें किस चीज के शौकीन हो. देन यू विल रिप्लाई आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश बोलने का शौकीन हूँ, और आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक, कि मैं संगीत सुनने का शौकीन हूँ. बट इफ आई आस्क यू दैट विच म्यूजिक डू यू वांट टू लिसन, कि तुम कौन सा गाना सुनना चाहते हो और तुम कौन सा संगीत सुनना चाहते हो. देन यू विल रिप्लाई आई वांट टू लिसन हिंदी सॉन्ग और आई वांट टू लिसन ओल्ड सॉन्ग. Then I'll ask you that are you fond of listening song? Then you will reply no, I am not fond of listening songs, कि मैं गाने सुनने का शौकीन नहीं हूँ. And I hope you have done a good revision. In today's lecture we will learn two rules, and our first rule will be dare to. It means whenever we try to showcase some daring things or fearless or fearless, there we use of this rule. And its question structure is do you dare to plus any action. Then you will reply yes, I dare to plus any action. But if you deny, then you will reply no, I don't dare to plus any action. Now I'll ask you that do you dare to do this thing, क्या तुम में ये चीज करने की हिम्मत है जिसमें आपका एक्शन कुछ भी हो सकता है. Then you will reply that yes, I dare to do this thing, कि हाँ मुझ में ये चीज करने की हिम्मत है. But if you deny, then you will reply no, I don't dare to do this thing, कि मुझ में ये चीज करने की हिम्मत नहीं है. जिसमें आपके एक्शन कोई भी हो सकता है. It can be any noun or it can be any pronoun. Now I'll ask you that as an example, do you dare to speak English, कि क्या तुम में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है. If you agree, then you will reply that yes, I dare to speak English, कि हाँ मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है. But if you deny, then you will reply no, I don't dare to speak English, कि नहीं मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत नहीं है. Then we will ask that do you dare to fight with wild animals, कि क्या तुम में जंगली जानवरों से लड़ने की हिम्मत है. If you agree, then you will reply that yes, I dare to fight with wild animals, कि हाँ मुझ में जंगली जानवरों से लड़ने की हिम्मत है. But if you deny, then you will reply no, I don't dare to fight with wild animals, कि no, मुझ में जंगली जानवरों से लड़ने की हिम्मत नहीं है. Now let's come to our second rule, and our second rule is want to be. It means whenever we try to showcase our goals, our dreams, our aims and our ambition about the things, there we use of this rule. And its question structure is do you want to be plus any action. It can be anything like do you want to be a doctor, do you want to be an engineer. But if you reply that yes, I want to be a doctor or an engineer, it can be anything or it can be any profession. But if you deny that, no, I don't want to be an engineer, कि नहीं मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता हूँ. When somebody asks from you that do you want to be a doctor, कि क्या तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, if you reply then you will say that yes, I want to be a doctor. But if you deny, then you will say that नहीं मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूँ, no, I don't want to be a doctor. When somebody asks from you do you want to be a lawyer, कि क्या तुम एक वकील बनना चाहते हो, if you agree then you will reply that yes, I want to be a lawyer, कि हाँ मैं एक वकील बनना चाहता हूँ. But if you deny then you will say
नो आई डोंट वांट टू बी अ लॉयर कि नहीं मैं एक वकील नहीं बनना चाहता हूँ। व्हेन एज एन एग्जांपल समबडी वांट्स टू आस्क फ्रॉम यू दैट डू यू वांट टू बी अ क्रिकेटर कि क्या तुम एक क्रिकेटर बनना चाहते हो। इफ यू एग्री देन यू विल रिप्लाई दैट यस आई वांट टू बी अ क्रिकेटर, बट इफ यू डिनाई देन यू विल से दैट नो आई डोंट वांट टू बी अ क्रिकेटर कि नहीं मैं क्रिकेटर नहीं बनना चाहता हूँ। देन ही विल आस्क दैट व्हाट डू यू वांट टू बी कि तुम बनना क्या चाहते हो। What do you want to be प्लस एनी एक्शन कि तुम क्या बनना चाहते हो जिसमें आपका कोई भी एक्शन हो सकता है। As an example, when somebody asks from you that do you want to be a hockey player and then you say that no I don't want to be a hockey player, then he asks continuously that what do you want to be in your life कि तुम अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हो। Then he will reply that I want to be a successful person in my life कि मैं अपनी जिंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता हूँ। एंड वी कैन कंबाइन आवर बोथ द रूल्स व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश विच वी हैव लर्न टुडे। एज एन एग्जांपल आई आस्क यू दैट डू यू वांट टू बी अ पुलिसमैन कि क्या तुम पुलिसमैन बनना चाहते हो। इफ यू रिप्लाई दैट यस आई वांट टू बी अ पुलिसमैन, बट इफ यू डिनाई देन आई आस्क यू दैट नो आई डोंट वांट टू बी अ पुलिसमैन कि नहीं मैं पुलिसमैन नहीं बनना चाहता हूँ। बट इफ यू अग्री देन आई आस्क यू दैट डू यू डेयर टू बी अ पुलिसमैन कि क्या तुम में पुलिसमैन बनने की हिम्मत है। If you agree then you will reply that yes I dare to be a policeman कि हाँ मुझ में एक पुलिसमैन बनने की हिम्मत है। बट इफ यू डिनाई देन यू विल रिप्लाई नो आई डोंट डेयर टू बी अ पुलिसमैन कि नहीं मुझमें एक पुलिसमैन बनने की हिम्मत नहीं है। देन वी विल आस्क दैट व्हाट डू यू डेयर टू बी कि तुम में क्या बनने की हिम्मत है। देन यू विल रिप्लाई दैट आई डेयर टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन और आई डेयर टू बी अ गुड पर्सन इन माई लाइफ कि मुझ में एक काबिल इंसान बनने की हिम्मत है और एक सक्सेसफुल इंसान बनने की हिम्मत है। सो आई थिंक यू लाइक दिस सेशन एंड आई होप यू विल रिवाइज ऑल आवर रूल्स एंड कॉन्सेप्ट। सो लेट्स फिनिश दिस लेक्चर हियर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।